So before we get started, hopefully all are of interview candidates, right? Or anyone there of prelims also. ये अच्छा prelims वाला ना समझते interview वाला डी. Prelims. Okay, no issues. Fine. So first we'll deal with the interview people, and then we'll go towards the prelims. So this is so-called guidance program, right? And I hope and I strongly feels you people could have some doubts. So before I start and say something else, please, any one of you, please ask your doubts to me so that we can work on it from the very first time. Doubt I'm talking about the interview people. Any doubts you have, whatever you know, you can on your cameras also. It is up to you. Doubt and start speaking. I understand the fact it is not an easy task to speak always, but the time has come to speak, right? Now please tell me, because in the interview board there will be three very senior people. You will be talking to them, and I'll tell you the logic of this so-called Viva voice. Now please ask me whatever you want to. Good afternoon, sir. What's up? Sir, do we have to go through any other thing apart from current affairs, district profile, and our optional? See, the three things which you have said is everything only. The moment you say current affairs, that encompasses everything. What else you need? The 80%. Sir, up to which month current affairs we have to go through? It is not up to which month. It is up to the, well, Jamiti Chalichi, now India is getting closer to China, right? Yes, but sir. is it a possibility for India to get close to China when we have a border issue? By Buchuda, now we will roam around something here. So interview dela bhitare ei topic ta eine thibo. 6 मास तले जो topic thila tar more or less relevance nahi. So I cannot say कि जेमती मोर ऑप्शनल भी इंटरनेशनल रिलेशन ही थिला तो माने किछि एक्स्ट्रा एफर्ट देबाक पड़ेबा एमती आईआर रे. See, I'm saying you, I have given multiple interviews too. Samane, let it be state PSC or UPSC. ସେମାନେ କେବେ ବି ଡେପ୍ଥ କୁ ଯାଇକି ପଚାରନ୍ତିନି. ସେମାନେ ପଚାରିବେ ତ ଗୋଟେ ଉପରିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା ରିଲେସନशिପ, ମ୍ୟାକମୋହନ ଲାଇନ ରେ କ'ଣ ହେଲା. The score you will take when you will give a depth answer. The question will be normal and nominal. Let it be mains or interview or anything, it will be normal and nominal. Se question na tu kete depth answer delu, that is a necessity. I hope you are getting Swati what I'm saying, right? Yes, sir. Sir, now gote doubt thila. Sir, actually से जो graduation subjects माने कौन थी कि मो भूली वाली नहीं तो केमती करिबे जदि मु किछ आंसर दे पारिबे नहीं तो. Now what is your graduation subject now? Zoology thila. Okay, zoology. I am saying to all those जो मानकर ग्रेजुएशन सरिया 2 वर्ष 3 वर्ष हेई जाईची, जदि मन नै एब्सोल्युटली नो इश्यूज, ताले करियर कोन छी, जूलॉजी कोन, तार एप्लीकेशन कोन, हम जूलॉजी कोन पई पढू, वेरी बेसिक नॉमिनल क्वेश्चंस which any Tom, Dick and Harry can say. You need to answer those things only. Very specifically they are not going to ask. Jodi bhi tu no koi parchu, there is always a very beautiful term that is called as sorry. Now today we'll talk about sorry also. What does that mean, this, that and all. Sorry kemiti kahiya tar mane kono, we'll talk all those things. Sorry is a very beautiful thing. Sathare mark kotteni, sathare mark mile. I will tell you the guidelines that has been given to the UPSC members. I'm talking about the UPSC interview, right? What kind of guidelines been given? We'll talk on it. Jodi tamara mana nahi kemiti, if you do not remember your +3 or your graduation or masters, it does not matter at all.
But if you have a physics graduation, you do not know what is physics. That is sin. ताको कोंती पाप. मते पचरा हबो what is zoology. If you do not know what is zoology, ताले चलला. Then it is your mistake. Application of zoology in civil services. जदि ताको कहि पानु, that is your mistake. What is economic zoology? जदि ताको कहि पानु, that is your mistake. Specific zoology रो conceptual scientific जिनस जदि आसुनी हो. Sorry sir. केमिति sorry कोंती, I will tell you today. I'm saying this to all, right? Absolutely no issues. तापेंगी mark मिलिबो तुमको. What else? Priyanka Nahak, open up your mouth and talk. Speak. And Samjukta, Susmita, Swetapadma, Sovarani. Yes. Now speak. Ask your doubts. Suppose ticket time. Subhalani. Instantly he will open for you. Not clear. Ask one second. Answer the time de. Sir, instantly answer देवा ପାଇଁ ପଡିବ ନା ଟିକେ pause ନେଇକି answer ଦେଲେ ଚଳିବ? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ. See, I'll tell you something. A very practical. I'll tell you. The moment you walk to the, okay fine. मु जहाँ कहूँ ठीक है सुनियो समझते हुए. I'll tell you what are the guidelines that has been given to UPSC board members. Okay, when I was जेतले mock interview में जेतले मु student रहिली नहीं, मु भी जाके बसली mock interviews माना करे बड़ा coaching center करो. सेठी आसंती ex UPSC members माने. Then I talk to them. ସେମାନେ कोंती कि तांको कोन guidelines more or less overall ले एया था guidelines. सुनो. Guidelines है कि they are seeing something called as personality. The third round is called as personality test. They will check your personality. ता माने कोन? ता माने then I ask them, sir, what does that mean? ता माने होची एया, do you have a bureaucratic trait? मुकली सर ता माने कोन? ता माने होची एया जत्त एटा समस्या मन लगा आज ठू. After this session, you should not be dependent on any coaching center or any bloody teacher. जेतेबेले तू जाई से चेयर रे बसिबू किंबा से रूम रे पसुचू, it is not Swetapadma or Priyanka or Swati or anyone who is a student. He or she is a bureaucrat. तू तले चाली के भीतर को जाउचू, बॉडी लैंग्वेज से देखचंती bureaucratic trait अछि कि ना. Collectors should have that bloody confidence. You just cannot have that dropped shoulders, and bowed down head. Same thing नथियो. तो तले चाली के जाउचू confidently अछु कि not overconfident. There should be a sweet walk. तापे मार्क्स अछि. तू जो ड्रेस पिंदुचू ताको तू कैरी करी पारछु ना आजि का पे कि खाली पिंदी के आसु तापे मार्क्स अछि. तू जाय कि ठिया होचू, that walk should be a bureaucratic walk. ले ठिया हबु चेयर साइड जे कि ठिया हो. जदि ठिया हेला रे जोडे क्वेश्चन पचरियो से माने ठिया की आंसर दो तापे मार्क अछि. तापर तू बस तापर से कहबे प्लीज सिट बसिलु. द पूरा कन्वर्सेशन सी गोटे ब्यूरोक्रेट संगे करिवे. से पूरा कन्वर्सेशन गोटे स्टूडेंट संगे करिवे नी. द मोमेंट यू विल गिव देम अ स्टूडेंट फीलिंग, दे विल से यू गुड बाय. पूरा गेम से भी चलिबो गोटे ब्यूरोक्रेटिक टॉक भीतर. Hence your talk should be bureaucratic, and bureaucrats cannot be abusive, cannot have lack of confidence. ये सब जिनस ताते सेठी देखार नाही. Till now तमरो कोन प्रॉब्लम हेची? Till now मोर भी थिला. आमे समस्ते स्टूडेंट जोन ने थिलु. मु सब बेले जेतले क्लास निए मु जाई सेठी भी कहे तम माने एठी स्टूडेंट हे कि ना हो. अब मु सेठी टीचर नो, मु सेठी ओटा कोच. It's a coaching center. So start speaking. Most of you has not came out of that board, the moment you'll go every time. Now a bureaucrat cannot bluff. काहे कि bluff कर परिबनी. bureaucrat ता senior को मिछा था कहि परिबनी. कहिले कोन हबो ना गुडाए बहुत लोक सेतरे मरि जिवे. Hence the moment you'll bluff, they will write fraud. तापर मतलब सर then what? The board member is saying to me, UPSC ex board member is saying to me,
एटा ठीक है सुनिबु जहा तू ता भितरे स्टेटमेंट कहबू एवरी स्टेटमेंट दे विल राइट एन एडजेक्टिव ऑफ इट दैट इज कॉल्ड एज पर्सनालिटी तू धर 6 थर सॉरी कहूचु आ तू स्ट्रेस रे जाउनु सेमन तते एमती क्वेश्चन पचाले कि तू 6 टा सॉरी कहलु बट दैट सॉरी शुड बी वेरी पोलाइट एमी वस्तुलु तो कहबू सॉरी सर टिके बेंड होबू फेशियल एक्सप्रेशन चेंज ही पारिबो तो सॉरी सर as of now I cannot remember it sorry sir if you can kindly dada tate pachare achi repeat karebu mane say all these statements sorry sir if you can kindly repeat the statement to the khali setia koi dubni sir pun thare kundu boli say all these beautiful lines sorry sir I just cannot listen to the question which whatever you have asked can you kindly please say sorry be koichu please be koichu can you please kindly be say these are the bureaucratic traits you are showing there so hence each sorry छटा सरे तू जदी ब्लफ करूनु छटा सरे तू जदी ब्लफ करूनु आ तांको पोलाइटली क्वेश्चन पचारि के जाउचु सी तोरा एडजेक्टिव लेफ्ट साइड रे ऑनेस्ट जोड़े पैराग्राफ थियो गोटे थियो लेफ्ट गोटे थियो राइट रे लेफ्ट आ थियो खराब एडजेक्टिव तक राइट रे थियो भलो एडजेक्टिव तक आमे ताको पूरा स्कोप रे पूरा इंटरव्यू राउंड रे आधा घंटा राउंड रे 15-20 मिनिट राउंड रे कोन सी एमती स्टेटमेंट दवानी जो थरे सी मोर ना गोटे खराब एडजेक्टिव लिखि दोथु आर यू गेटिंग द प्ले नाउ तू चाली के जाउछु ब्यूरोक्रेट हे बसछु हेंस ब्यूरोक्रेट should have a different knowledge of different dimensions that's it सी तीनटा लोक बसथिबे 8टा 10टा डायमेंशन रो क्वेश्चन पचारिबे डायमेंशन कोठू आसीबो से most of the question as of you know will come from your DAF detailed application form or candidate information form candidate information form माने कोन माने होचे या कि तू ताको तू लिखिछु the beautiful part of CAF is this they have mechanism to cross verify the CIF they have the beautiful part is this they will not cross verify it I repeat they have the mechanism to cross verify the CIF the सबुठ भल पार्ट हो सेमान ताको क्रॉस वेरीफाई करिवेनी तू जहा लिखिछु से माने मानि कि चलिबे सत तू तेणु को सेथरे जहा लिखिबू सेथुरु जदि तू फ्लंक कर जाउछु ताहाले से मोस्टली करंट अफेयर आडू जिवे नहले तारी भीतर बुली ताको सारीबे तू जदि जूलॉजी लिखिछु ताले जूलॉजी कहया को पड़िबो तू जदि लिखिछु डांसिंग इज माय हॉबी ताले डांस को पढ़ी कि जा कारण ताको तू लिखिछु जदि सेथरे आंसर देई पारुनु ताहाले से कोन लिखियो ना दे विल राइट अ नेगेटिव एडजेक्टिव फॉर इट द कंप्लीट गेम इज दिस whatever statement you say they will write an adjective of it that is called as personality even if you are saying 5 sorry out to tu se sorry re pressure podi ki भांगिनु एक तो लिखिबे ऑनेस्ट तापर लिखिबे कॉन्फिडेंट तू जदी 6th सॉरी बड़ को भांगी की भूल कहि देलु से ऑनेस्ट न लिखि साइड लिखिबे फ्रॉड एतिक बुझे लागा Yes, sir. Now, in this complete game, पूरा गेम भितरे से जो कहना समस्त कहते नॉलेज चेक करनु प्रकृत रे नॉलेज चेक जो करना ता माने होची एया किंतु एई ने जो हॉट टॉपिक दैट इज गोइंग ऑन इज द टैरिफ imposition of US on the America and the closeness of the Chinese with the Indians US on that of the India and the closeness of the Chinese and the Indians how that is sustainable is a question तापर तू सेठी कहि परबनी कि सर मोर तो PSIR ऑप्शनल नुह मु जानि पालिनी ए क्वेश्चन ने तू यू कैन नॉट फ्लंक ए क्वेश्चन के तू फ्लंक कर परबनी से किछि कहबे से हंस देबे स्माइल मार दे ओके नो इश्यूज कि तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबे तापर लिखिबे अनअवेयर ऑफ द इंटरनेशनल इश्यूज now there are concerns now there are 2 women deaths now 2 women got burnt in Odisha right now if you are a woman a high probable question on you for you jodi tu se condition में थांतु से इशू टाको केमिति हैंडल करथांतु circumstantial questions रे सॉरी कहि हुएनी तू जदी डीएम हे थांतु कोन करथांतु you cannot say sorry
धर नक्सल अफेक्टेड प्लेस रे पड़लु तोर पॉलिटिकल लोक भी चोर अछंती दे आर करप्ट सीनियर भी करप्ट यू आर अ यंग मैन वुमन देयर तू केमिति हैंडल करियो यू कैन नॉट से सॉरी ते तीनटा पॉइंट कहि साला पर सी जदी कहबे आउ कह आउ तू भाबी पारुनु रिमेंबर मी भाबी कि सबस्टैंडर्ड आंसर दे किंतु they are not worried about your substandard answer they are worried कि तू तो लिमिट क्रॉस कला परे भाबी पड़छ ना भाबी पारुनु तापर ताकू स्कोप दे लेखिया को आउट ऑफ बॉक्स थिंकर एरा सब एडजेक्टिव यूपीएससी वाला के पाखरे थाए लेखिया पई कि hopefully as our state PSCs also follows the UPSC model they should be following the same model also Uttar Pradesh MP believes in the same kind of model hopefully Odisha would be also doing the same are you getting the basic law of this game to chali ki jibu Manas Kumar Soren in that place will be a bureaucrat which is walking to the board it is not the student Manas hence that bureaucrat would be speaking that Swati would be speaking a bureaucrat who would be speaking hence that bureaucrats have a body language तो पाखरे पावर थिले तोर गोटे बॉडी लैंग्वेज चेंज हे जीवो hence be that powerful men and women do not abuse your seniors hence please kindly sir I kindly forgive me adjective जे बड़ बड़ सेंटेंस तो कनो दैट्स सो सीखी सॉरी सर जदी सुभा गलानी kindly forgive me sir or madam whatever बुझिउची if you can kindly repeat the question मैं टिके धरि की झुकी की मार्क मते मिलुची या पई की the moment you see a stress and one thing is clear see we all are human beings you are not well trained people stress ता भीतर हबो because what is stress I'll tell you what is stress means this brain is not trained for various things so it is seeing things for the very first time so mock interviews are truly needed बुली दियो जते बोल जाके पार्टी पूरा खोली जाइनी जते बोल जाके तोर फ्लुएंसी आसुनी तते बोल तोर एड्रेनालिन फ्लो रहुची सेटा बंद होउनी तते बोल मॉक दवा कथा आ मॉक इंटरव्यू वाला कर कोचिंग सेंटर वाला कर सब फीडबैक नवा कथा नुह एठू भी नियन सब फीडबैक कथा नुह पूरा गेम होउची मु ता आगे रे बसी की हां समन आस टिके टाइम ने की कहला बना हां बरम टाइम ने की कहया कथा the moment you will enter the board you will sit से तो प्रथम क्वेश्चन पचारिबे they are smart enough to know कि तोर स्पीकिंग स्पीड केते ता पई मार कटिबनी few of the students have got stammering problem that is a natural problem absolutely सेथरे किछि असुविधा नै ता पई मार्क्स कटा हबो नी बोली गाइडलाइन अछि किए भल रे कहि पारु नी ता पई मार्क्स कटा हबो नी बोली गाइडलाइन अछि कि इंग्लिश भल कहि पारुनी तापे मार कटा हबनी बोली गाइडलाइन अछि तू जदी इंग्लिश मझरे कहि पारुनु ओडिया को शिफ्ट करके कह सेतरे मार्क दिया हबो बोली गाइडलाइन अछि गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग this is absolutely no issues if you do not have a fluency yes please सर सपोज इंग्लिश रे कहू चंदे देन ओडिया को जदी शिफ्ट करया थ परमिशन नै कि ना ऑटोमेटिक शिफ्ट देख गोटा फ्लुएंसी रे अछु मझरे ओडिया रे कहि दे परिबो असुविधा धर गोटे फ्लो अछि आंसर रो धर चलची इन समथिंग अबाउट सम इश्यूज फ्लो अछि तू ता भितरे ओडिया पूरे की कहि दे परिबो यूपीएससी रे कोन असुविधा हुए आई एम टॉकिंग ऑफ यूपीएससी तू मझरे हिंदी जदी पूरे दोछु बोर्ड मेंबर जदी साउथ वाला थिबो से बोधवे न बुझी पारे तेणु करी यूपीएससी रे मना करथि स्टेट पीसीएस रे तम लोकल स्टेट लैंग्वेज तू पूरे की कहि परिबु तेलुगु कहि परिबु आंध्र प्रदेश राइट ओडिसा रे ओडिया कहि परिबु असुविधा किछ नै एत किंतु आमे जदी गोटे लैंग्वेज रे पूरा कहि दोछु देन दैट इज गुड that shows that you have the capability to grasp various languages and Odisha re normally ame Hindi Odia to kahi hi do English is also close to us right slow kahuchu कि तू जोरे कहि परिबु
that is none of your concern. ताकर गाइडलाइंस अछि तू प्रथम आंसर जतले देई दलु से माने ट्रेंड से माने जानि जिवे कि पिलर फ्लुएंसी एति कि से आ ता पई मार काटिबेनी तू जे नर्वस हे गलु कथा कहि पालुनी दिस दैट एंड ऑल ताहाले से लिखि दे आर ड्यूटी बाउंड टू राइट ड्यूटी बाउंड ना लिखि देबे स्ट्रेस्ड हे गला बोली स्ट्रेस्ड nervousness. Think of a DM who got stressed in a condition of a riot hochi gote DM toro stressed he gala. Do you want that kind of DM? Of course no, right? Hence when you will be walking to the board, you are a DM who is walking, hence cannot get stressed. Stress mane hela toro hormones low heichi, hormones blood re baschi. The necessity is to give some oxygen. जोठी stress हला चुपचाप सेठी निश्वास नबु. Do not breathe hard, but breathe a longer breath, right? Inhale longer. जा कहली ठीक रे सुनिबु. Stress ता भितरे हबो. मॉक इंटरव्यू रे सब करी के आसीबु. जोठी stress रे पडिबु निश्वास नउचो सेटा ठीक लंबा नै जिवु. हला और ड्रेस पिंदी जाइथु भलो. लंबा नेले कोन ड्रेस जते कोट फोट पिंदी थिले से पे मु सबले पिला कुए खरा हो पछे कोट पिंदी जाइथा कारण ता भितरे एसी अछि कारण जदी स्ट्रेस रे पडिलु निश्वास नबु निश्वास नेले से कोट भितरे आ जणा पडिबोनी से inhale longer so your blood will get oxygen. You will see the concept of pranayama and all, so the mind ta immediately calm हे जो and that is needed. मु ताकू स्कोप कोठी दउनी कि लेखिया पई कि नर्वस हे गला मु ताकू स्कोप दउनी कोन लेखिया पई कि ना से स्ट्रेस्ड हे गला बुझी पछ लटा कोन गेम रो बेटे. यस सर. यस सर. तो गेम रो लॉ होची या कि मु ताकू देखोनी मु स्ट्रेस्ड हेची मते मार्क मिलुची नॉट स्ट्रेस्ड होबार मते मार्क मिलुनी कि मु 10 रु 8 क्वेश्चन आंसर दे दीची मुझसे 8 क्वेश्चन को डरी डरी भय रे थंगी की भूल भाल करके देची सी मोर मार काटिला सेठी ब्यूरोक्रेटिक टॉक्स चलची ता भितरे बुझला एति की. यस सर. हां सर. एइने पचार सर आउ जदी आमे हमरो लैंग्वेज सिलेक्ट करा हिची इंग्लिश एंड आउट ऑफ ए सडन गुटे ओडिया रो क्वेश्चन आसिला तो सर सेटा ओडिया रे आंसर दबु ना इंग्लिश रे आंसर दबु. इंग्लिश रे सी if you are in a position to speak in an English way absolutely no issues to English से दोनों हबो तो ओडिया रे भी देई परिबो. इंग्लिश से जदी तू चूज करछ इंग्लिश then continue in English no issues with it. ता पई कि मार कटेनी बोली इंस्ट्रक्शन थाए कोई असुविधा नहीं किसी तरह. ओके सर. बुझला को सर लास्ट टाइम जो पैनल मेंबर समस्त इंग्लिश रे पचारले बट सडनली से ओडिया रे क्वेश्चन पचार देले तो सेथिरे ओडिया रे ही आंसर दबु ना इंग्लिश रे आंसर देय हेबे. अरे जहा कले हबो whatever you do that is correct. जहा कले हबो कथा होची you just simply need to show your good personality, that's it. पूरा गेम what is personality मु तुम कोन कहली पर्सनालिटी. हां समस्त कोन स्माइल कर मारियो you should be, of course you should be smiling. A bureaucrat cannot under stress. But if there is a question on those two women जे एबे जले की मरी गले जदि से क्वेश्चन पचारची you cannot dare to give a smile. It's a very serious matter रे स्माइल दियंतिनी तला सेटा तापर उल्टा हे जो तापर. So now you are smart enough after clearing your mains you are smart enough कि कोठी स्माइल मारिबो कोठी प्लीजेंट पर्सनालिटी देखिबो आ कोठी देखिबोनी. You are smart enough to do it, right? So no need to worry about it. Getting what I'm saying? India China relation पचारची India US relation पचारची किबा any of the national issues पचारची नाले water degradation पचारची छत्तीसगढ़ ओडिशा डैम इशू पचारची और border issue पचारची. These are serious issues. You cannot show your teeth there. तो सेठी स्माइल में परिबोनी
serious issue को seriously handle करा हो. The question will change, your personality will change. That is what is called as bureaucratic traits. बुझेला? Stress आसीओ, stress आसिले inhale करे कि निजको calm down करियो. एटा मु केन कथे तले मु फर्स्ट इंटरव्यू देली. I was giving mock interview in Bajiram, Delhi. AC फेसी लागिची मो आगरे you know 5 board members were there. There was a ma'am who was a chairman, ex IAS officer. Answer भी दउची मु. I was also giving answer. मु पूरा झाड़ रे माने गाधी पड़न. That was my first interview. मु पूरा गाधी पड़न में झाड़ रे. 15-20 मिनिट पर बोर्ड बाध्य होई गला इंटरव्यू बंद करिया को. I was giving answer. तापर मोर इंटरव्यू माने बंद होला मत कहले बाहर को जाओ. तापर मु असली फेरी की मॉक इंटरव्यू कथा मु कहूचला. तापर आसी बसिली. तापर मु गोटे कथा मार्क कली. The same me, the same 5 people. एथर को मते नर्वस लागु नथला. मते तापर मैडम पचले जतले तू भलो आंसर दोथुलु, why you are so nervous? मुकल मैम, I was not that nervous. ना yes, you are all whole sweating. तापर से मत देखिले एडजेक्टिव्स रे से मते लेक्चर ने नर्वस 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 4 थर लेक्चर से नर्वस 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 कला जदी ए एडजेक्टिव ने कि जीव ताल तते मार्क मिलिबोनी सेठी गेटिंग. तापर मु मार्क कली सेठी कोन सेही 5 जण लोक बसछन्दी, सेही मु, एवरीथिंग इज सेम, द सेम रूम, एवरीथिंग इज सेम, बट माय फ्लुएंसी इज अदर, माय कॉन्फिडेंस इज अदर. मो सब अलग थिला सेठी. मैडम पता कहउचंदी कि मु तोर ए आई वांट टू सी दिस असीम, यू आर शोइंग मी दैट असीम. अरे आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. Yes, sir. But that was self imposed. तापर मते लागिला. तापर मु सोटू बाहरली बाजीराम भीतर मु बाहरली मेट्रो धरली. देन आई वेंट टू मुखर्जी नगर सेटल थाए दृष्टि आईएएस. तापर मु सेठी मोर चिन्हा पचे थिले. मु सांग सांग कोन करले ओटे मु लगिले ओटे मॉक इंटरव्यू मु तापर जाकी देली दृष्टि देली. प्रथम 5 मिनिट मोर सेया परिस्थिति थिला. 6 मिनिट रे आई स्टार्टेड ब्रीथिंग. मु सेटा को प्लान करी जाइथिले कोथि ना मेट्रो भीतर. 6 मिनिट रू दैट इंटरव्यू वेंट अप टू 45 मिनिट्स. ता पर 40 मिनिट आई वाज ब्लडी बेस्ट. माने दैट देयर आई केम टू रियलाइज दोज स्ट्रेस कंडीशंस वाज सेल्फ इंपोज्ड ऑन मी. काहे कि ना मु गोटे जगह देखि के आसी सेम बोर्ड मेंबर पाखरे मु बसथली. आधा घंटा पर आई वाज behaving in a better way. Hence मु एई जिंसो टकू अन्य मॉक रे तापर मु जाकी अप्लाई करी. मॉक करे तापर मु यू जदी तमरो नर्वस रहउची कम टू दिस जोन. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट मेसेज आई एम ट्राइंग टू गिव यू. जो जगह स्ट्रेस रे पडुचू से जगह टकू मॉक सेहिति पई मॉक हुए. मॉक इंटरव्यू रे एनालाइज करे से स्ट्रेस टा केमती हैंडल कराबो सेठी ब्रीथिंग टेक्निक रे ताकू ठीक करे. तापर पुनी ओटे मॉक दे स्ट्रेस रु बाहर जा तोर एई वर्ष क्लियर हे जे. देन यू आर शोइंग दैट व्हाट ना द ब्यूरोक्रेटिक ट्रेट्स टू हैंडल स्ट्रेस. सी तो से देखचन सेठी स्ट्रेस हैंडल मैनेजमेंट रा. दिस इज द बिगेस्ट मंत्र. सप्लाई ऑक्सीजन टू योर ब्लड. बड़ बड़ ड्रेस पिंधि जाई था ता भीतर निश्वास नेले जेमति जणा पड़िबो. यू शुड बी वेल ड्रेस्ड बिकॉज़ ऑफ दिस. बुझला? हाँ सर. सर हैंड मूवमेंट करे होगी आंसर दला. हैंड मूवमेंट सी नाउ आई हैव बिकम अ टीचर. मोर एने हाथ एम चलियो. बट यू कैन नॉट डू दैट. किंतु एमती बसी की एमती नॉर्मल हैंड मूवमेंट करी हो. इट इज नॉट अ we are not robots कि समझ कोन हाथ एमती करथु हाथटा एमती थोइथु हाथ हलिबोनी बाबा काई हलिबोनी सब हलिबो. बट इट शुड नॉट बी डिसरेस्पेक्टफुल. तू तांको आंगुठी देखै परिबोनी सर किसी कर परिबोनी किंतु गोड़ पे थुआ आइछि मिनिमम मूवमेंट हाथ हेई परिबो. बॉडी रे मिनिमम मूवमेंट हेई परिबो. गोटे पॉइंट पर अंटा काटी. हां चेयर रे बसिलु
अंटा बैक जो दैट बैकबोन चेयर ने कि एंड रे लगेबू अंटा काटे कारण ताकू सपोर्ट मिलुनी अंटा टाकू सपोर्ट देई बसु जाकि चेयर अगर बसिलु टेक योर टाइम टू सिट 3 सेकंड 4 सेकंड चुपचाप टाइम नहीं बसिबू सेठी अंटा टाकू चेयर पूरा एंड रे लगेबू सेटा थाउ सपोर्ट रे नहले एमती एमती हे कि तू हलिबू गोटे पॉइंट रे एमिति 10 मिनिट रु बेसी बसी होबनी अंटाटा लागि थिले आधा घंटा जानि तू सेमती बसी पारिबू सो टेक योर टाइम टू सिट ओवर देयर हैंड मूवमेंट मिनिमम हे पारिबो ना हां गोड़ हलेबुनी सेठी गोड़ को एमती फोल्ड करके बसिबुनी गोड़ ताकू कोन करियो ना सीधा रखियो चाली की जीवा पई मार्क अछि बाहर की आसे पई मार्क अछि हां आउ गोटे जिंस पई मार्क थाए डोर टा खोलुचु यूपीएससी रे ओपीएससी रे भी मन लग थाइडा ला तो पे कि ओटा डोर खोली दबो यूपीएससी ओपीएससी बोथ तो पे कि ओटा डोर खोल दबो तू आ जाई कि खड़खड़ धड़ धड़ करके डोर खोल दबुनी कि ओटा खोल दबो मे आई कम इन सर मे आई कम इन मैम देखियो चेयरमैन किए जदी मैडम थिबो तले भाई मैम जदी एत्ती की देखि पन्नो तले तो भूल सेटा मैं कम इन सर कम इन मैम कोई भितरु जीवु डोर तोर खोलियार नाही कितले बाहर को बाहरिबू से डोर टा तू खोलिबू मोस्ट ऑफ द प्लेसेस रे गवर्नमेंट संस्था तो ए जो डोर स्टॉपर टा सेटा बहुत टाइट हे जाय तापर जे कि दुम गिना माड होई जीवो तू सॉफ्टली खोलिबू सॉफ्टली ताको बुल्ली की धीरे किना डोर टा बंद करिबू धड़ धड़ माड हो मार काटिबू से साइड एटा आउ गोटे गाइडलाइंस है डोर को ठीक रे कर जो चेयर रे बसुचु खड़खड़ माने साउंड क्रिएट करी बसुचु कि से लेखिबो ताको पुनी उठुचु साउंड क्रिएट करके उठुचु कि एना सब गाइडलाइंस मॉक इंटरव्यू हमें एथि पई करू कि एई सब गुण भूल भाल तक हमें हैंडल कर दो आउ गोटे कोन हो मॉक इंटरव्यू रे छोट छोट रूम थियो हला यू डू नॉट हैव स्पेस टू वॉक रियल इंटरव्यू बोर्ड रे तो पर स्पेस अछि चाली की जीवार जोड़ा का भीतर कोन रहइबो तफात रहइबो हमें सेठी गोटे चेष्टा करिया गोटे जगह रे मॉक दबार जहार रूम ता बड़ होइथियो विल ट्राई जदी हेई पाला न हेई पाला गेटिंग बुझियोची Yes, sir. now these are very small things but this is called as personality test बेसिक जीएस पढ़ी जो को पढ़ियो थरे गड़ी दे जस्ट गो थ्रू न गड़ी पाले भी ठीक अछि ऑप्शनल देखि जीवो सुन स्टेट पीएससी वाला व्हाट इज स्टेट पीएससी होउची तू गोटे ग्रुप ए चाकरी भी पाइले सेटा बड़ नुह कि छोट नुह मझी मझिया चाकरीटा कलेक्टर बहुत तले 15-20 वर्ष डिफरेंस अछि क्लर्क रो बहुत ऊपर तेणु करी तू ऑर्डर नबू ऑर्डर दबू कलेक्टर टा खाली ऑर्डर दबो आईएएस ऑफिसर खाली ऑर्डर दबो करेनी से किछि करेनी से खाली कुहे किंतु स्टेट पीएससी वाला एमे जे काम करंती तेणु करी बी प्रैक्टिकल एटी ऑर्डर दिया हबो ऑर्डर निया हबो से तुमको फैक्चुअल क्वेश्चन पकड़िए अब किसी बात नहीं काहे कि देखथबो क्लरिकल एग्जाम हो ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जाम हो वन लाइनर क्वेश्चन थिबो सेथरे स्टूडेंट माने घुसी के आसंती ताकर कोन ऑर्डर मिलिबो फैक्ट हमको दिया हबो हमें काम करियो स्टेट पीएससी टा मझी मझिया जिंसटा ताकू जोड़ा को दरकार तेणु करी हम पर किसी बाट नहीं ऑप्शनल पेपर तो गड़े कि भाई तू जीवु आ जो मानकर वेरी बेसिकली ज्योग्राफी ऑप्शनल अछि आ पॉलिटी और पीएसआईआर रा पॉलिटी ऑप्शनल अछि तुमको तो गुडाए क्वेश्चन पचरा बहुत क्वेश्चन पचरे सर डैम फैन ये से याडू साडू पचरे डू नॉट गो टू द थिंकर्स बेसिक ज्योग्राफी पढ़ी कि जीवा को पड़िबो किछि बाट नहीं तारो एथि नुह सब स्टेट पीएससी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो पीएसआईआर हो पॉपुलर से पॉलिटी पचरिबे ही पचरिबे देयर इज नो सेकंड ऑप्शन टू दिस आर्टिकल फार्टिकल लैड शॉट टिके देखि जाई था बुझला से माने तो ए सिटिंग रे कहला कानो नाउ इंडियन पार्लियामेंट और ओडिशा पार्लियामेंट असेंबली इज गोइंग थ्रू सम रक्षक्स एंड ऑल ताकू सब देखि कि जा फैक्चुअल जिंस से माने पचरिबे ना हां ना काहे कि मझी मझी रे एटा कोन मझी मझिया चाकरीटा फैक्चुअल जिंस रे जदी आंसर न दे पल्लू असुविधा कि अछि ना ना
आंसर देइथिले इंप्रेसिव हेइतांदा मार्क कटुनी किंतु कम इंप्रेसिव होउछ किंतु मार्क कटुनी जे भूल ब्लफ कर दउछु से ताला फ्रॉड लिखि दबो बुझला Yes, sir. एइने पचार कोन पचार हमें एतिक जानले एटा होछ लॉ एटा होछ गेम रो लॉ एतिक तापर हमें ने खेलिबा बुझला हां एई सब कथा कोचिंग सेंटर माने कर कुहा हुएनी कारण या पर तमरो डिपेंडेंसी रहिबनी का पर कोचिंग सेंटर ऊपर किए कोन फीडबैक देला मोर सेथर किछि जायस नै मोर जायस होउची तोर एडजेक्टिव तक जो सब लेखा होउची सो कॉल्ड एडजेक्टिव लेखा होउची पॉजिटिव साइड ता बेसी था इंटरव्यू दे की जाई साला पारे 5-10 मिनिट पारे 5 मिनिट 10 मिनिट पारे सेकंड कैंडिडेट आसे काहे की तीन जण गोटे मिनिट तीन जण जो ता भीतर थिबे से माने सब लिखथिबे कोथरे पेपर रे निज निज भीतर तापर कथा दिना सर अपन देखले तो सही जगह रे सही कैंडिडेट मिछता कहला तो हां हां मिछता कहला निजो भारी स्मार्ट भाबुछ दिस इज द वे दे यूज्ड टू टॉक से चेयरमैन तक मार्क दबो किंतु तीन जण जेतले सेम एज ग्रुप रो बसी की कथा वार्ता हेबे चेयरमैन तक इन्फ्लुएंस रे बसियो पूरा स्कोप कोठी देना जेतले तू उठी के सेठू जाउचू तीन जण तो विषय रे किछि नेगेटिव कथा वार्ता हो बुझेला हां प्लीज आस्क ज्योति क यस सर सर नमस्कार मोर डाउट ला कि मोर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट मैच करेनी ऑप्शनल सहित दो मु आर्ट्स रे कछ माने इकोनॉमिक्स मोर बैकग्राउंड बट मो ऑप्शनल ला सोशियोलॉजी तो एंड मु बहुत टाइम पूर्व छाड़ सलानी इकोनॉमिक्स सो मु जानिनी टू गो हां मतलब शुड आई गो फॉर कि केते डेप्थ रे जिबे इकोनॉमिक्स रे व्हाट इज योर ऑप्शनल सोशियोलॉजी then go to some extent to that of the sociology depth. Economics is not that needed, but Okay. economics re India is the fourth largest economy, right? You can Right. speak something out of your GS knowledge. So we do not need those depth knowledge. Even the board members do not know it. Okay. Board members both normal loko, aam admi like your father and mother, Mhm. right? They Okay. they used to read newspaper. Setta kisi doubt nahi. Basic Okay, things sir. can be said, no doubt in it. No need to go into the depth. Thank you, sir. पचार गुड आफ्टरनून सर सर मु ओएफएस टा टॉप प्रेफरेंस रखितली माने ओएस पूर्वरु तो तारो किछि हाँ? प्रॉपर जस्टिफिकेशन कोटा फाइनेंस सर्विस टा सर मु फाइनेंस हां फाइनेंस सर्विस टा मु एडमिनिस्ट्रेटिव ऊपर रखितली तो प्रॉपर जस्टिफिकेशन किछि सर केमति कोन देले ठीक रहबे now please tell now I am the board I am asking you why you have kept OFS above the civil services sir I'm working with I'm working in secretariat with financial advisors who belongs to the finance cadre of state so I'm impressed with I'm learning from them so sir empty type of kitchen sir so you could have learned from the OCS also right what's wrong in it sir same line remove jiba ko chahuchi se way who no answer so as I'm working with the finance cadre officers so I'm also willing to go with the same pattern and I want to explore in finance field of the state government are answer the significance of the finance in that of the administration that is what the backbone is all about now frame an answer by showing the significance of the finance but tapar kahibu yes sir the tapar kahibu ki civil services part is also very much needed mate laguchi mu bahut beshi bhalo contribution kari pari but interest separately achi so I am not keeping OCS to be in the second rather I have put OFS to be the first क्योंकि मु जेतु काम करछि मोर इंटरेस्ट अछि आ फाइनेंस रो बहुत बहुत एथर रोल अछि क्लास स्टेट ईयर मते लागले कि भलो
contribution dei paribi provided mate jodi civil services miliba I'll be more happier than to what they are also because to ago nijo signature khelu तापर कहलु कि मते सेटा मिलले भी चलिबो एठी थिले मु बेसी भला काम करि पारे बोली मते लागिला तणु के सेटा सेकंड हेई गला मु ताको सेमति तळवा किसी करनी बेटे Okay. और नाउ फ्रेम दैट आंसर देन स्पीक ओके आस्क मान पदरे सर आउ सर मु जॉब रिलेटेड क्वेश्चन पचरा में कहूची मु एबे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रो अछि तो सर एबे कि से विजिलेंस डिपार्टमेंट रो बहुत करप्शन केसेस गुडा आसुची हमर डिपार्टमेंट रे तो सर सेही गुडा केमती क्रॉस क्वेश्चन आसीबो कि सिचुएशनल बेस्ड सर सेटा तो सर सेटा माने को आड को नै जिबी माने आंसर टाको कि इट्स नॉट को आडगु नै जु इट्स अ वेरी सर्कमस्टेंशियल क्वेश्चन राइट तो आंसर कोन दबु जेंति त मु नॉर्मली पचरी नाउ प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू and I'm asking this question to all of you, right? Now, please tell me, when the system is so corrupt, give me some practical answer why you will not be corrupt. And do not say me your idealistic, ethical, moral terms because every corrupt people, used to say. Tell me why you will not be corrupt. Moral, ethical answer koi boni mate thi basiku. ମୁଁ ଏମିତି ଥିଲି ସେତେ ଭଲ ହେଇଗଲି ଏମିତି ହେଇଗଲା ସେମିତି ହେଇଗଲା ଡୁ ନଟ୍ talk those nonsense say me something practical why you will not be corrupt sir in my view being an officer it is not something like an honest officer an officer should be honest and it is a as we know it is the fundamental aspects and the fundamental properties of an officer that it should be an honest officer. So in the honest officer there should not be any corruption. ସେମାନେ ଶୁଣିବେ କହିବେ okay thank you ସରିଲା I don't have sir answer excuse me sir answer ଟା ଏମିତି ହେଇ ପାରିବ କି as and we know that if we do corrupt practices then it might be means create difficulty in our career and we will get punished also and apart from this from ethical point of view we know this is a right to duty so we follow the code of conduct and code of ethics sir ei type ro hi paribo ki sir I'll tell you something okay sir this round is called as personality test viva right? It is not interview mains jota tame ne just clear kari kasa that is personality test written right mains answer copy re tu jaha likhu seta thik do you know this mains ro copy re adi toda major blunder na karuchu tu jaha likhu seta thik set they will simply see your personality and to some extent your knowledge also I'm talking of UPSC not any of state PSC hopefully एठी भी सेया होउथिबो तो एठी जाहा स्टेटमेंट दो भाई सेटा ठीक रे whatever you say that is correct statement रो से माने adjective लिखिबे are you getting what I'm saying तो बोर्ड कहि देछि कि moral ethical concern मते तू कहना तू moral ethical concern सेठी कहिबुनी आउ जदी कहिलु से मार्केटला से लिखिबो ता पर adjective गाइडलाइंस फॉलो करि पनी माने स्टेट तते गोटे गाइडलाइन देछि ब्यूरोक्रेट तू गाइडलाइंस फॉलो कर पालु कहिबो दिस इज द बेस्ट आंसर आई एम सिंपली सेइंग यू ओके बोर्ड कहि दिछि माने कहि दिछि आ बोर्ड रो गाइडलाइंस अनुसार ही आंसर तू सेठी दबु आ बोर्ड थरे पाटी खोलिबो तू पछे आधा आंसर कहि तू तोर पाटी चुप हे जो चुप जे जदी भी निज निज भीतर कथा होतिबे तते लागुथिबो तते लागिबो कि सेमने गोटे क्वेश्चन पचारिबे चुप हे जो तापर सेमने तते अनेबे तापर आस्क परमिशन सर कैन आई कंटिन्यू प्लीज सी कहबो हां तापर तू कहि सी कहिछि सी द answer which I'm going to say you now was once been said to me by one of the ex UPSC member से मते कहिथिले तापर मु बुझतली आंसर केमति फ्रेम करन से मते कहले तू कोन पई करठ बोले मु सेमति बड़ बड़ कथा कहली यार सर मोरल एथिकल ये से ऑनेस्टी I said all those things then he said son see listen son listen Nikali sir
ना तू एमती कहबो ना सर आई एम फ्रॉम ए मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली हमें एतिकी हमर किसी क्वाड सर बैकिंग नथिला आ मोर सर एते खर्च ही नहीं ना मोर मद अच्छी ना मोर अन्य ड्रेस अच्छी ना वेहिकल ऊपर इंटरेस्ट अच्छी मोर को ए सब मेटेरियलिस्टिक जिंस ऊपर आसे हम पाखे स्कोप भी नथिला सर तेणु करी मोर भारी लिमिटेड खर्च ता बाद रे गवर्नमेंट बहुत बहुत मत सैलरी दउची घर दउची गाड़ी दउची सब दउची मो पाखरे सर कोनोसी एबे पई कि मो पाखरे कोनोसी कारण नाही मु कोन पई चोरी करी as of now I do not have any reason sir why should I will be corrupt so as of now ता पर moral ethical concept को तू कहू मोर फैमिली सिस्टम है या मोर ट्राइब जदी if you are from a tribal community मोर ट्राइबल values है या then you can talk of the moral ethical part hence this is the completeness of an answer from this answer तापर मु गोटे कथा एठु मु सिखिली कि ब्यूरोक्रेट्स माने सेठी जो बसिक ताकर एक्सपेक्टेशन कोन मु ए आंसर सिखथली ताकर माने को टाइप रो कोन ना जिंस भाबंतु तापर दी तीनटा मॉक देली जोठी कि ब्यूरोक्रेट माने बसथि देन आई स्टार्टेड फ्रेमिंग ऑफ आंसर्स राइट करप्ट काई हबोनी तू तांगोटा प्रैक्टिकल कथा कहूचु निज लाइफ रे बुझिउची whatever you said that is correct but Yes, this is sir. a more appropriate answer that's the whole thing are you getting the law of this game Yes, sir. Yes, Yes. Thank you, sir. पचर सपोज से माने गोटे सर्कमस्टेंसेस देले आउ पचारले जे तुम एक्शन एथरे कोन हबो बट से डा तुम अथॉरिटी बाहर थिबो देन सेटा केमति टैकल करियो अथॉरिटी बाहर थिबो माने प्लीज टेल ए सर्कमस्टेंस please give us a think and give a circumstance अरे भाभी कह this is the time to think and say सपोज माइग्रेंट इशू हैला कि नेशनल सिक्योरिटी ऊपर ऐसे अलग छे अरे कहूनु सर्कमस्टेंस का क्रिएट अ सर्कमस्टेंस and say सर माइग्रेंट इशू नहीं के okay migrant issue tapore and tell the question no ता क्वेश्चन नहीं okay we'll deal with it करिया तो अभिज्ञ कोंती आगा सर सपोज एमती क्वेश्चन हैला माने सेथरे ऐड करिया को चाहिबी कि जदी आमो सर्कल रे गोटे सपोज मो सीनियर करप्शन करूची सेटा मो जुरिस्डिक्शन रे नाही कि मु तास तो रिलेटेड नाही बट मु जानी छी से करप्शन करूची से अन्य डिपार्टमेंट रे अछि तो आउ ता जोगु माने कोन ओवरऑल माने गोटे इंस्टीट्यूशन रो लॉस होची जदि मु ताकू डायरेक्टली कन्फ्रंट करूची ताले मे बी से एमती किछि सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करूची जोथरे कि मो चाकरी या फिर मते किछि हार्म हे पारे then whether how to take the action or what should I report whether I should report or not of course you report now please tell the answer the answer go सर आंसर सर माने फर्स्ट ऑफ ऑल तो जदि से एमती किछि माने करप्शन करूचंती देन मो रिटन प्रूफ तार किछि एक्वायर करी जहाँ भी अच्छी सब जदि से तो भी मो सहित कनेक्शन रे आसीले कि किछि फाइल मूवमेंट मो थ्रू होई गला देन रिटन रिकॉर्ड्स रखी भी तार और एल्स जदि मते किछि अन्य सोर्स रो प्रूफ मिलले ताने मो से प्रूफ रखी भी तापरे तांकर जे भी हायर अथॉरिटी थिबे माने से सीनियर ऊपर जे सुपर सीनियर थिबे तांकू से मैटरटा नहीं कि कहिबी okay answer is correct whatever you will say that is correct here answer is correct
but more practical answer is this. See, जेतु more practical answer ए क्वेश्चन टा भी आगुरु पचरा हिच more practical answer is this. सबुले तमे क्लोज थिबो तमरो इमीडिएट सीनियर संगे, नॉट से डिपार्टमेंट रो तार सीनियर संगे, राइट? किंतु पूरे डिपार्टमेंट रो जेमिति ए डिस्ट्रिक्ट डीएम से डिस्ट्रिक्ट डीएम संगे माने सेमती क्लोज थिबो जस्ट बिकॉज़ बोथ आर डीएम, दैट्स इट, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट. बुझेला? सब बेले ए आंसर ए क्वेश्चन आंसर होची मु मोर इमीडिएट सीनियर को सहित कथा है, तापर ए मो सीनियर का ताको सीनियर सहित कथा हो, बिकॉज़ दिस इज ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी इज सो कॉल्ड कौन ना चेंज रे चले. तू जदी एपो डिपार्टमेंट टू सेपो डिपार्टमेंट को जीवो आरी ताले सेपरेट से तो कथा सुनि तोर विरोधी हो से सब बेले ए टाइप रो क्वेश्चन रे सब बेले प्रथम पॉइंट होची आई विल टेक माय सीनियर इनटू कॉन्फिडेंस. मान तू कौन ना तू कौन देखो तू ब्यूरोक्रेटिक ट्रेड्स रे मु मोर सीनियर जो लाइन ऑफ चेंज अछि मु ताको भांगुनु ए देखिया पे समान चाहूतले. रेस्ट ऑफ द थिंग्स व्हिच यू हैव सेड दैट इज करेक्ट. ओनली वन थिंग दैट वाज मिसिंग, you will go through your senior to that senior, if possible that to this senior will talk to that senior. Rest of the things is an imaginative question. Situation based questions are always imaginative based questions. Imaginative questions ra practical oriented है कि imaginative answer है ही परिबो. बुझेला? परिबो. तो you just sir जदी senior corrupted थिबो then जदी senior corrupted थिबो then what? Now please tell me, the question is being asked, जदी तोर immediate senior है corrupt अछि then what? सर सही लेवल रे के जे कि किंतु तोर डिपार्टमेंट भितरे तापर क्वेश्चन पचार जदी तार सीनियर करप्ट थिबो, so these things can also be pulled in a chain, right? से एते कथा पचार समझ जानते ता भितर समस्त चोर बोल हला बोले निजो डिपार्टमेंट भितरे थाई की काम करिवो. These are bureaucratic traits. yes sir. You said that is correct only, but just do not cross the chain, that's it. Yes sir. Rest of the yeah to be bhal answer achi, but I am saying what could be the probable things. Then ask something about your hobbies. Telegram group रे hobby ऊपर गुडा जिनस दिया आइची, यदि के ना हो then go to the group and get it. I was that मु थिली सुन बहुत पिला कर हॉबी न थाए, जदि हॉबी नहीं व्हाट इज हॉबी? हमर जहा एने परिस्थिति ग्रेजुएशन सरला पर चाकरी गोटे पाया पे मुंड खराब होची, हॉबी कोठन उपरु हॉबी हॉबी किछि न थाए. मिडिल क्लास फैमिली रो हॉबी कोठी आसीयो रे बाबा? फिर किछि न थाए. यदि किछि नाही देन क्रिएट अ हॉबी, राइट इट. कथा देन क्रिएट गोटे हॉबी टा भाब. जेतले मु स्टूडेंट थिली हला मु तले प्रथम इंटरव्यू देली एसीएल कोन सर कहूची तले मु स्टूडेंट थिली तले पचरा हला ई तोर कोन हॉबी मु सुड मल्ली मु 6-7 दिन बुलची भाई कोन हेई परिबो हॉबी. बिकॉज़ आई वाज स्टेइंग इन दिल्ली, my finance was that crash those days. मो ऑटो करके भी जाई परनथुला मु खाली चाल चली जाए ऑटो माने मेट्रो बसी जी गुड्डा बाटा चाल जी तापर चाल चली आसी मु एते चलीली चालिया हैज बिकम माय हॉबी. मते पचले तू जतले कोन करू मु सब बड करना चाल चले मु सेतले बनेथि प्रथम हॉबी प्रथम आम टाइम रे हॉबी बनेथि वॉकिंग. नाउ दैट हैज बिकम अ वेरी a famous hobby now walking. तापर वॉकिंग विषय में पढ़िली वॉकिंग कौन, स्प्रिंटिंग कौन, हाइकिंग कौन, ट्रेकिंग कौन, रनिंग कौन, जॉगिंग कौन. रनिंग और जॉगिंग भितर कौन तफात अछि बुझु तो? वॉकिंग एंड रनिंग भितर तफात. कैन एनीवन ऑफ यू से मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रनिंग एंड वॉकिंग? डू नॉट टेल मी स्पीड. Speed, everything, every Tom, Dick and Harry will say. What is the basic difference between walking and running?
कौन अछि So there is difference in rate of respiration also. कौन So difference in rate of respiration. माने As we run, respiration rate increases. respiration okay then see the Sir, basic walking is less energy consuming. Jit is saying jumping good very good Jit अरे walking रे जोड़ा को गोड़ एका संगे ग्राउंड रे थिबा ला रनिंग रे एमिति मूवमेंट आछो जोड़ा गोड़ एयर रे थिबो एइटा भी मत गोटे किए कहथिला ना जने ब्यूरोक्रेट कहथि हला सीनियर दिल्ली इज दिल्ली नो डाउट इन इट जेले मोर बीएस बसी वाज माय लास्ट इंटरव्यू रे मोर बोर्ड थिला बीएस बसिंगर बीएस बसी वाज द दिल्ली कमिश्नर पुलिस द माने द टफेस्ट बोर्ड एवर ताको बोर्ड को कहीं जानती नहीं भाई मोर ही पड़ला बेला खराब मोर पड़ला मोर इंटरव्यू स्टार्ट हला वॉकिंग रो मते पचले कोन वॉकिंग जॉगिंग जिमिंग योगा बुझु तो मोर कोन थिला हॉबी कोन थिला वॉकिंग वॉकिंग रे किंतु मु कोन पढ़ी जाईथिली मु को पढ़ी जाईथिली वॉकिंग जॉगिंग ट्रेकिंग हाइकिंग स्प्रिंटिंग एत पढ़ी जाईथिली सी ताको मन गोटे आनी पुरेले जिमिंग एंड योगा बट आई वाज इन अ पोजीशन टू हैंडल इट गोटे हॉबी तू बाछिबू ताकू लेखिबू तापर फाइनल स्कूल ना एटा तो मोर हॉबी हो नथिले सेटा मोर हॉबी हला तापर ता ऊपर प्रिपेयर करिवू तू पोएम राइटिंग कहूछ हला तापर कहू ना डू नॉट राइट हां आउ लेखिया समय तमर गलानी माइक ऑन कर पचारे डोंट राइट एनीथिंग हियर नाउ ऑन योर माइक if possible on your camera and speak तापर मोर गोटे थिला वॉकिंग आउ गोटे कोन थिला मोर काकी मन पड़ुनी हला आउ गोटे थिला प्लेइंग बास्केटबॉल मु बास्केटबॉल भी खेली छी कथा होची आई वाज इंटर टेक्निकल नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर आई वाज अ स्टेट कबड्डी प्लेयर आल्सो एते मोर सब थिला तने करी जेहेतु बास्केटबॉल मु लेखि देइथिली पढ़ली सब तापर नेशनल प्लेयर की इंटरनेशनल प्लेयर की इंडिया रे पोजीशन कोन बास्केटबॉल प्रीमियर लीग कोन ये से दिस दैट एंड ऑल सीआईएफ रे सेति की लेखिबू तू जेति की हैंडल कर परी धर मॉक इंटरव्यू रे हैंडल कर पनो काटी दे बुझेला किंतु सीएएफ तकू कंप्लीट करी कि नै कि जिया पई और कंप्लीट सीएएफ ऊपर थर होबा को लागियो 4-5 दिन दैट्स इट अब बेसी लागिबो नै 5 दिन 7 दिन मैक्स मन लगे हॉबी हॉबी न थाए हॉबी हमें क्रिएट करू किसी पिला लेखन प्लेइंग चेस एंड नो वन विल आस्क यू टू गो ऑन बेसिक चेस रो लॉ ऑफ सब पढ़ के जाई था बेसिक मूव्स तक जानी था बुझला किछि एबे गोटे चलची नुवा ड्रामा ना कोन ए जो पेन रे गारंटी सेटा कोन इज अ काइंड ऑफ एन आर्ट राइट अच्छा स्क्रिबलिंग अच्छा स्क्रिबलिंग हां समथिंग सेठी से माने कोन करिवे दे कैन डू दिस वेरी वेल दे विल गिव अ व्हाइट पेपर एंड अ पेन प्लीज स्क्रिबल तत देबे 30 सेकंड अच्छा तू जा जोटा स्कोप रहुची तांको आगे रे से माने करी धन एइने करी की देखा तू जदी ताकू कहि देलु कथा सरी गला जरा जदी तोर जेन्युइन हबी ताले लेख मोर जेमती वॉकिंग नो वन कैन आस्क मी टू गो एंड वॉक एंड शो मी राइट प्लेइंग बास्केटबॉल नो वन कैन आस्क सिंगिंग पचर दे पर टिके गाइलु बुझला कुकिंग दे कैन नॉट आस्क राइट तोर जदी कुकिंग भी हबी नहीं किछि जायस नहीं प्रिपेयर करि परिउ जदी लिख दे इफ यू कैन प्रिपेयर देन राइट इफ यू कैन नॉट प्रिपेयर देन लीव इट ओडिया पिला तू एंड बेसिकली जियो से पछरी बेसिकली पिठा पुरा सेवरी से आरिसा पिठा आसीओ ना आसीओ तो कहू ना ना कोन आसीओ ना बिरयानी सइला नथिंग रॉन्ग इन बिरयानी तू ओडिसा रा कोन कल्चर देखैलु that is not your personal hobby your hobby is reflecting something to your service or not hobby ऊपर क्वेश्चन केमती आसे
एटा मन रखितला हाउ योर हॉबी स्किल विल बी हेल्पफुल टू योर सर्विस इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन गोटे पिलार थिला हॉबी कुकिंग हला सी जाइथला फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस तक पचारला कि तोर हॉबीटा फॉरेस्ट सर्विस रे केमिति हेल्प करियो सी बसी भाबुची कि मु रोसई करी कि नै कि काहा को खुआइबी सी पूरा तारी भीतर भाबिला तापर दे शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एनी हॉबी एक्स वाई जेड हॉबी से हॉबी रे तू किछिटा स्किल जनरेट करछु ठीक रे सुनी बोला या पर मॉक इंटरव्यू रे मते क्वेश्चन पचारीबी आ फीडबैक देबिनी फीडबैक एई ने गोटे हॉबी रो धर तोर हॉबी होची खेलिबा हला एनी स्पोर्ट्स रे गोटे स्किल तू जनरेट करिवु लीडरशिप एनी खेल रे लेट इट बी चेस एनी खेल रे तू आउ गोटे करिवु ना कोन ना टीम वर्क हला स्पोर्ट्समैनशिप एई सब टाइप रो टीम वर्क एई ने तू कहिवु टीम वर्क ता सिविल सर्विसेस रे केमति काम दबो लीडरशिप ता सिविल सर्विसेस रे केमति काम दबो कुकिंग रो जदी तोर हॉबी अछि तू हंगर बुझुचु लोकंगर एंड सिविल सर्विसेस वाला जदी कार सोसाइटी रो हंगर बुझी करूची ताहले सेटा काम द बुझी परछु तो नॉट कि तू डीएम है कि बस कि रोसई करके लोक मान खाया को दबु ना तू इनोवेटिवनेस शिखछु तोला कारण गुडाई मसला याडू सडो मिसे व्हाट इज कुकिंग यू आर ट्राइंग टू कंबाइन वेरियस फूड प्रोडक्ट्स टू क्रिएट अ न्यू फूड or a new dishes so you have learned innovativeness from it that innovativeness will be helpful in your forest service in your police service in your civil service this that and all to sports रे खेलले भी तू कुछ स्किल जनरेट करछु any question that will be asked think think नो तू एई ने बसे की ए क्वेश्चन ना आंसर ता प्रिपेयर कर देकी जाइथु आउ गोटे प्रॉब्लम कोन हबो जो क्वेश्चन ना आंसर तमे प्रिपेयर करी बसछ द मोमेंट द बोर्ड विल आस्क यू विल जंप टू द आंसर डोंट डू दैट टेक 2 सेकंड्स जेम तू भाबी की कहउछु दिस इज प्रिटेंशन दिस इज स्मार्ट प्रिटेंशन बुझियोची हॉबी बोली किछ न थाए जनरेट कर लेख रिसर्च कर पढ़ दे की जा हॉबी रो केमदी यूज कराबो हॉबी रो गोटे स्किल बारियो स्किल ता केमदी ने यूज करछु दैट इज द क्वेश्चन ब्यूरोक्रेटिक इंटरव्यू एटा भाईबा एटा सबुले सोसाइटी पई कोन करि पछि सोसाइटी पई कोन हला सोसाइटी मु सर आसिले पूरा सोसाइटी को बदली देबी मुई तो हां भाई एवरीवन नोस कि तू या पर जाई चोरी ही करियो होपफुली तुम माने करिवनी काहे कि बिकॉज़ द आम आदमी और द कॉमन मैन व्हिच यू आर नाउ आर इमेंसली सफरिंग ऑलवेज रिमेंबर ओडिशा forget about India of Odisha there are numerous women who are being raped killed body thrown ता बापो आजी जाय बुलुची नै ताको जस्टिस मिलियो छेना गुडा मिलियो किछि मिलिबनी से झियोर ओटे भूल थिला कि शी वाज अ डॉटर ऑफ अ कॉमन मैन एटा मु सबोले कोए इफ योर फादर कैन नॉट अफोर्ड 5 एडवोकेट्स पांचटा वकील करि परना कि तांकर एते टका नै तुमको जस्टिस किछि मिलिबनी भाई किछि मिलुनी कोठी बाजे कथारा you will be entering to such a system we are hoping from this new breed to bring some change at least you will not think of that father and do not be corrupt everything is not business बुझिउची कोचिंग सेंटर जदि मते चलेर थांता एसो कथा मसी एठी कहि न थांती कोचिंग सेंटर ए कथा कुहा हुए नी तमर डिपेंडेंसी सरी जीव का उपरु टीचर को उपरु दिस इज द लॉ ऑफ वाइवा वॉइस पर्सनालिटी देखि तू असुता भितरे आ मु एक्सपेक्ट करूची कि तम भितु जो माने पाइबो सेमन जाय काली चाकरी कर एटलीस्ट एफआईआर ता तो लिखिबो एबे गोटे जियो मिसिंग हेतला एबे ता बापो जाउची 3 दिन पुलिस थाना गरे बुलची एफआईआर लिखनांती 4 डे से झर बॉडी मिलला बेको एमती काटचंती कि एउठू 3 सेंटीमीटर बचिची मात्र we are staying here
Okay, we need some that bloody change. If you want to be in the system, play according to the rule. Rule is that Pragya Paramita or Abhigna or Lohit, which is working to in that board, see the chair upare bossy, seta a bureaucrat bossy. Say Jyoti is not a student. Jyoti is a bureaucrat with whom the board is talking to. Hence, you show those bureaucratic traits. ताकू तमे कोनसी मामला रे भी disrespect कर परिवनी. They are fatherly figures. This is BJP government. These are cultural nationalist people, to be very frank, and pro-women. At least ideology say RSS-based ideology and we'll act accordingly. We'll get the job first, then we'll see. Are you getting the pulse of the sitting government? Nationalism, you're out. You're out. Nationalism re rahibi. Indian culture bhite re rahibi. Pro women rahibi, and it is also, and it has to be also. Nationalism is not the game of only BJP. Nationalism is the game of all Indians, right? And this party, this government is in force. They will choose such people. They are not. Do not think they to be religiously biased. No, they are culturally biased. Indian culture biased people, and it is a very good thing though. This is a pulse, okay? Understand the pulse and play the game. Yes, please ask. सर जेमती एबे इलेक्शन कमिशन रो कि किछि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मानकर ऊपर जो तांको क्रेडिबिलिटी ऊपर जो क्वेश्चंस आसुछि तो आमे केमती माने सर एबे जो सर एबे जो एमती इलेक्शन कमिशन हो कि ईडी हो तांको ऊपर माने तांको क्रेडिबिलिटी ऊपर जो क्वेश्चंस आसुछि जदि ता ऊपर आमे केमती ओपिनियन दे पारिबा आम अगेंस्ट तो जाई पारिबानी तो अगेंस्ट दिबर भी नहीं तो सर माने कोन किछि केमती सेटा को टैकल करबा see now let's come to the topic of that EC been blamed, right? EC been blamed. Let's come to the topic first. EC been blamed not only by Congress, also by BJP. I hope you might be knowing this, right? Not only by UPA or that indie bloc, also by NDA. I hope you might be knowing this, huh? It is not only Rahul Gandhi who has blamed EC, it is also BJP who has blamed EC. Eta jancho na jannu? Yes, sir. Jancho. Then this is the best part. Then we'll act according to the law and the constitution. Ame kebe bhi ame constitution virodhi hei paribani. Dhara konosi blame laguchi election commission upare. Election commission is not above the constitution of India. Let it be an institution. Ta upare se nuho. Hence, jodi ta upare se blame ta lagichi, election commission should come out with specific answers also. They might be a constitutional body, but they are answerable too. So this kind of blames are being put out by other political parties also, let it be in ruling or be in opposition. So thus being having such a grave kind of accusation on a constitutional institution, the institution should come out with its answers, and hopefully they have came also. We have still faith on our election commission because तापरे commission ना praise करा start कर दो. आगो कहलु कि they are answerable. सेमान को कहया कथा opposition no any party, all the parties has accused. तापरे सेमाने answer भी देई चंती. आमुक तांको ऊपर hope अछि. And India is such a big democracy. It's बड़ा democracy टा such a big number of people. ता भितरे बहुत challenges and constants रही पर problem no. Challenges and constants are there. Under that, we have successfully conducted elections from since independence till today, and hence it's a very efficient body. Provided these kinds of allegations are being put on it, and they should be answerable, and rather they have given the answers to. माने मु जिनसा तक balance भी करली, तापरे finally support कर दिली election commission.
बुझेला इंस्टीट्यूशन केबे खराब न थाए पुलिस एज ए सिस्टम इज नॉट बैड पुलिस रे किछि खराब लोक थाई परम बुझिउची Yes, sir. नाउ यू नीड टू फ्रेम दैट आंसर एई सब क्वेश्चन पचरा हबो आईएएस परीक्षा तो माने श्योर पचारि थांदे ए सब क्वेश्चन को फ्रेम करके लेखिकी आंसर बने की मिरर आगे ठिया के दे तीन थर कथा है कि मॉक रे कहि दे कि ओटा फ्लो करके नेकी जीव दिस आर प्रोबेबल क्वेश्चंस दीपटा साइड कहली बैलेंस करली एंड रे इलेक्शन कमिशन को अकाउंटेबल भी करैली तो आंसर दवा कथा से देई जीबी तापर कहूची तार सिग्निफिकेंस कोन एडो बडो डेमोक्रेसी भीतर बुझला Yes, sir. पचार नेक्स्ट आ गोटे थाए अचीवमेंट राइट लेट बी वेरी क्लियर मोस्ट ऑफ यू लाइफ रे अचीवमेंट नाही बोली एकी बस आईडी फाइडी था तू जाई सेठी ने था बहुत पिलाकर अचीवमेंट से खास नहीं यदि कार अच्छी अच्छी जेमिति मत समस्त कहले यू हैव प्लेड इंटर टेक्निकल बास्केटबॉल ये से मते केबे लागलेनी अचीवमेंट सेटा स्टेट कबड्डी खेल दोची ये मते केबे लागिलानी अचीवमेंट माने से नुह किंतु जदि लागुनी यू नीड टू राइट समथिंग तू जदि जेमिति मु खेलथिली स्कूल रे जोनल खोखो ईस्टर्न जोन खोखो प्लेयर नो मते केबे लागलेनी अचीवमेंट किंतु एने ताल लेखि भी ताले मु कोन मु लेखिथिली जोनल खोखो प्लेयर बोली स्कूल कैप्टन ना मते लागे मझे मझे बुझला जहा तू स्कूल रे करछु जहा करछु से पार्ट टा को गैप छाड़ीबो जोड़े तीनटा चारटा लिखि दे कि जीव किंतु चारटा लिखले चारटा पढ़िया को पड़ियो दैट इज द ट्रबल बुझला तुम केबे कोनोसी जगह ब्लैंक छाड़ी कि जीवनी गोटे जगह ब्लैंक छाड़ी पारिबो वर्स्ट केस जदी तोर किछि वर्क एक्सपीरियंस नै और नाही तो आ कोन करतै धर तू लास्ट 6 वर्ष हेलानी प्रिपरेशन करूछु और तोर सिलेक्शन है यूपीएससी रे तो एमती बहुत अछंती ना एज हेलानी एज बोली किछि न थाय हला 4-5 वर्ष हेलानी 6 वर्ष हेलानी तू प्रिपरेशन करूछु तोर हेई पालानी इंटरव्यू देइछु दिस दैट एंड ऑल तोर हेइनी से 6 वर्ष गैप ता केमती देखैबू सेटा एमती देखैबू जमती मोर भी हे जेतला ना मोर लास्ट अटेम्प्ट आसोस मोर गैप हे जेछि 6 वर्ष किंतु मु करथले कोन सेतले मु सेतले पाल्टी थली टीचर आई वाज टीचिंग इन कोचिंग सेंटर्स तापर आ कोन करथली मु खाता चेक थु नै कि क्वेश्चन बना थु नै कि कंटेंट बना थु नै कि ए फील्ड रे भाई सब कर दिछि मु टीचर थु नै कि आई डिड ब्लडी एवरीथिंग टू सर्वाइव किंतु मु से पार्ट खाली करके जाए कौन करतो तुम 6 वर्ष 7 वर्ष मु कहली सर आई वाज प्रिपेयरिंग ना एत दिन जाएंगे मु कहली हां आ को करथां ना काई कले ए दिन प्रिपरेशन मु कहली सर मु आगु इंटरव्यू देइछि तणु कर मते लागु छि कि आईएएस मोर हेइ दिए ना तले ऑन केमती करछो माने तुम हमर कोन घर तक आस मु कहली ना ना केमती करछु मु कहली सर या करछि खाता चेक करछि पढौछि ये करछि से करछि जर्नल पढौछ तो ना कोठी मु कहली ए चाणक्य रे पढौछि मित्राज रे पढौछि ना दिस आर बिग प्लेसेस मु कहली हां ना लेखुन दगु तापरे मते जो बोर्ड मेंबर जे नथिले से कहले एई पार्ट ता तो जदि 2 वर्ष रु बेसी गैप हे जैछि तो दे थर्ड ईयर रे जदि का भीतर किछि लेखुनु मेसेज दोछु बोर्ड को मन नथा 2 वर्ष रु बेसी गैप हे गेला किबा 3 वर्ष रु बेसी गैप हे गेला तू जदि किछि लेखुनु बोर्ड को मेसेज दोछु कि तू जीडीपी रे किछि कंट्रीब्यूशन करूनु नेगेटिव मेसेज गला अन्य जगह तापर मु पचाली सर अन्य जगह चाकरी करथिले तांक पर तो प्रूफ अछि ना अपॉइंटमेंट लेटर अछि जॉइनिंग लेटर अछि पे स्लिप अछि मो पर तो किछि प्रूफ भी नहीं कोचिंग सेंटर रे किछि प्रूफ न था मु जीबी क्लास ने भी मते टंका देबे सर लागे मोर तांका संगे रे किछि रिलेशनशिप नहीं जीरो मते सार कहउछन तापरे बोर्ड पाखरे मेकानिज्म अच्छी चेक करियार किंतु बोर्ड तुमर क्रॉस चेक करिवनी तमे केते ठीक लेखछ केते भूल लेखछ बोर्ड खाली देखिबो तमे जस्टिफाई करि परछ ना करि परनु जो मानकर 2 वर्ष 3 वर्ष रु ऊर्ध्व गैप अछि मु कहूची कोन ओटे लेखि कि जा हला व्यापार करथली
कोचिंग रे पढ़ौथली खाता चेक करथली सर रोड रे नाचुथली टका मिलुतला बट राइट समथिंग रीड ऑन इट जस्टिफाई इन द बोर्ड एंड कम बैक मार्क मिल दियो मते लिस्ट ना दरकार है जहार लंबा गैप जहार गैप नहीं तो छाड़ दे 2 वर्ष 3 वर्ष ए फील्ड रे एक्सेप्टेबल 3 वर्ष बेसी जहार गैप अछि आ किछि करन चुपचाप गोटे कोन लेख सर खाता चेकिंग करथली तो कंटेंट डेवलपर will they do verification of past employment they can demiti no one will write on your mic and ask se lekha lekhi dina galani मोर एने संसार रे कहीं भी आसे कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को मोर चेक कर परिबेनी आई एम ए फ्रीलांसर आई वाज वेरी रिसेंटली इन अरुणाचल प्रदेश मु केमी जाइथली सेमती फेथ काम चलती हमर मु गली क्लास नेली मते टका देले मु आसिले गेम ओवर या पर जीबी बेंगलोर केमी जीबी से मते फ्लाइट टिकट पठे मु जीबी क्लास में टका देबे मु आसिबी हमर एम्प्लॉयमेंट लेखा लेखी ये से किछ कोचिंग सेंटर चलछि फेथ रे बुझिउस तो मु कोन कहूची एमिति धर ओके नो इश्यूज धर किछि नाही 4-5 वर्ष 6 वर्ष एमती मोर गोटे गैप हो जाइछि मु गोटे एमिति एम्प्लॉयमेंट लेखि जा जहार से चाहिए भी किछि कर परिबे मोर घर रे व्यापार अछि सर मु गोटे छोट बिजनेस मोर चलै छि कोन कोन चेकिंग करबो तमे कर बुझिउछि आ तू सेठी लेखि परिबुनी कि सर मु एसएससी सीजीएल क्लियर कर दैथिल नाउ यू कैन नॉट राइट दैट सर हम घर रो बिजनेस अछि मु से बिजनेस चल सी पछे को बिजनेस ताकू प्रिपेयर कर देकी जा बस के रिसर्च फेस करी लेखा लेखी करी दिस दैट पढ़ी पचाले मु कह दू दिस इज कॉल्ड स्मार्टनेस असुविधा किछ नै मु जेन्युइनली पढौथली तापर से मत पचाले तमे कोन पढौछो मु कहली हिस्ट्री से कहले तमर को ऑप्शनल फिलोसफी तमे को हिस्ट्री पढौछो मु कहली सर सेटा स्कोप मिलला हिस्ट्री टीचर नॉर्मली मिलंदेनी अब बीजेपी गवर्नमेंट तो मिलिबनी भाई तू भूल जा और जो मैंने सब सीनियर टीचर दे आर टीचिंग दोस कम्युनिस्ट हिस्ट्री एंड ऑल और ए गवर्नमेंट लेखि आसु फेल फेल ही आसु बी क्लियर these are the needs I teach what the body wants जनो करी मोर कहला ना मु चाली गली जेहेतु मु लेखि देछि हिस्ट्री तापर समान मते देखिले कहला तू कहीं हिस्ट्री टीचर टाइप तो देखा जाउनु हिस्ट्री टीचर कांटी बुढ़ाई थो ये तो से थो दोस डेज आई वाज क्वाइट यंग आल्सो मुकली तापर दे आस्क क्वेश्चंस मी ऑन हिस्ट्री तापर गोटे पॉइंट आसी मत पचाले व्हाट इज जिहाद प्रथम इंटरव्यू जो मोर बुडी थिला दैट टू जो बोर्ड रे त पचाले व्हाट इज जिहाद मु आंसर भूल देके आसी बुझलो व्हेन इस्लामिक इन्वेजन केम इनटू इंडिया when Islam came into India पुणी आंसर भूल मु मूर्खता को कहूची कोन ना मोहम्मद बिन कासिम भूल थिला you have claimed to be history teacher and you do not know when Islam came into India मु कहूची मोहम्मद बिन कासिम बोला बुडला तापर then they came to what is Kama Sutra Molio what is the significance of Kama in governance game over interview out काहे कि ना टीचर क्लास पढ़ा देनी मुस्लिम स्टूडेंट थिबे ताको खराब लागिवो इंडियन स्टूडेंट सेडी बसছে फुल स्टॉप झियो माने थिबे ताको खराब लागिवो इट इज एन इंडियन किंतु बोर्ड रे पचरछि ना नेक्स्ट इंटरव्यू को आई वाज प्रिपेयर ऑन ब्लडी एवरीथिंग पचार कम पचार तापर मु सेठी किछटा भूल करी आसले सेठी आई विल टेल दैट समडे आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग तू लेखि दे पारिबू किंतु प्रिपेयर करी कि जीव लेख पारिबू ना हां 3 वर्ष बेसी गैप थिले एमती गोटा केना लेके व्यापार करथली सर किनु खाल रे बसिन आई एम नॉट दैट यूजलेस सर
सर माने जदि आमे कहूछु कि आमे सपोज कोठी पढौछु एमति माने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रे कोठी अछु एज टीचर देन सेटा जदि माने आमे जेतो माने मोर जति एमएससी अछि नेट अछि तो एमति डायरेक्शन रे पळिबो कि माने तमे तो सेपटे टीचरशिप लाइन रे जाय पारथंतो वाय माने सिविल सर्विस पाने चाहूछु It's an easy question to answer. Now, please tell the answer. सर मैंने जनरल आंसर तो ये कि मैंने डाइवर्सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अच्छी बहुत डाइवर्स अपॉर्चुनिटी अच्छी सिविल सर्विस मोर फर्स्ट टाइम एंड गोटे भल प्लेटफॉर्म जो थे मो नॉलेज एंड ऑल यूज करके सोसाइटी में किसी कंट्रीब्यूट कर परिबी क्लासरूम रे से जिनटा कन्फाइन हे जेबो देख एटी कोन तो भूल कलु आंसर पूरा ठीक कहि के आसिलु तू एंड रे टीचिंग प्रोफेशन तो गाली गदु कोन दरकार थिला कोन दरकार थिला कहिया कि एठी मु आई विल गेट कन्फाइंड टू द क्लास दरकार ही नथिला ना तू एठी कहि थां तू सब तो भलो भलो कहि के आसिलु सर मु जदी सिविल सर्विस जॉइन करिवि एटा मन थला सब बेले केबे भी कोनोसी गोटे प्रोफेशन को डिग्रेड करिवनी सिविल सर्विसेज ता हो जो सुपर सेट ता भीतर सब सबसेट के आस लेट इट बी फॉरेस्ट्री और एनीथिंग टीचिंग ता भी ता अंडर स्कूल आसो सब आसो सर मोर जो टीचिंग एस्पिरेशन अछि कंट्रीब्यूशन दवा पई कि मु चाहूची एजुकेशन लाइन रे सेटा मोर सिविल सर्विसेज भीतर भी भलरे मु तको करि परिबी मोर जो नॉलेज अछि मु स्कूल्स मानकर असुविधा जानची टीचर मानकर स्टूडेंट मानकर असुविधा जानची मु ताको एठी आसी कि एड्रेस कर दे परिबी हेंस सिविल मु दैट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर मी मु एजुकेशन पार्ट को भी जस्टिस दे परिबी बिकॉज़ मोर सेटा प्रोफेशनली कॉम्पिटेंसी अछि apart from that other segment of the society को भी मु एड्रेस करिबो hence it will be a win-win situation for me apart from that the things which you have said that is correct never confine never say anything negative about your positive your present ये job पता लागु थियो कि मु सेमति नेगेटिव कहिनी किंतु the moment you say कि मु ए क्लासरूम भीतर कन्फाइन हे जिवि that is a negative statement whatever money you are getting from there सेथरे हमर किछटा लाइफ चलुची so will never give a negative message पचरे आउ की थिला सर आउ से जॉब माने से गैप ईयर जदी जदी जेमति मोर 4 ईयर गैप हला तापरे गुटे जॉब हेची तो सर सेही जॉब रे सेही गैप आज्ञा इन तो जॉब छाड़ दे नो ओके सर Good evening, sir. Sir, suppose somebody comes from Cuttack and they have completed their schooling there, but later on now they have moved to Bhubaneswar and have completed their college or like permanently settled there. Like now they are having their home and all, and they have also changed their address in Aadhaar card. So, sir, which district do we need to prepare? Like we have to. Does not matter. Whatever been written in CIF, you have to prepare that. जो डिस्ट्रिक्ट मते सीएफ देखा जो पता से पता जला दैट टू भुवनेश्वर एंड कटक आर टू वेरी बेसिक डिस्ट्रिक्ट्स और बेसिक प्लेसेस यू नीड टू नो सेमिते भी बुले माकी तते भुवनेश्वर क्वेश्चन एनीवन यू माइट बी पचरा तो हबो ही हबो आई थिंक तू ताकू जहां मैसेज दबो से तते सही थरे पचरियो Okay, sir. Whatever message you are giving to them, they will ask you on that. District profile, hopefully you have got it from our Telegram group. Hopefully it has been given there, right? Yes, sir. District profile and hobbies that is being made lucidly. बिल्कुल ए माया मोहर रुहनी कि बही पढ़ कि जीव तुमको मटेरियल दिहला सेतु से माने किछि पचार देबे जदी भी किछि न पचारछन्ती डू नॉट वरी एट ऑल दैट इज नॉट द गेम Game is the law which I said you from the beginning of this class. Personality is the law. What is personality? Now those adjectives which they are going to write. Clear? Think and ask. Will they do verification of past employment? No. किसी नहीं एमती धर गैप नाही एमती गोटे लेखिक जाए जो थे से किसी कर भी पारे कि पढ़ी जीव
सर सपोज हमर स्पोर्ट्स रे बैकग्राउंड अछि ताहले आमे माने कोन बट आमे जो एप्लिकेशन फॉर्म रे पुलिस सर्विस टा टॉप रे देउ तो ता माने सेमति किछि क्वेश्चन पचारि परंती कि व्हाई नॉट पुलिस सर्विस इज टॉप आई मीन प्रेफरेंस तमे देना कहला सर माने सपोज हमर स्पोर्ट्स एंड ऑल रे हॉबीज अछि माने हॉबी सेक्शन रे मोर स्पोर्ट्स किछि एक्टिविटीज अछि देन एमती बट जो एप्लिकेशन फॉर्म रे हमें भरिछु सेठे हमें माने पुलिस सर्विसेज रे फर्स्ट प्रायोरिटी देइनु देन ଦେଇନୁ से रिलेटेड ना दे दिया है ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଥାଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଥାଉ ସେଥିରେ ओके they see what is democracy. Democracy, I hope you might be knowing, जो मैंने मोर क्लास करता they would be knowing this, is a feminine concept. डेमोक्रेसी टा ही फेमिनाइन कॉन्सेप्ट. डेमोक्रेसी भितरे सिविल सर्विसेस टा फेमिनाइन कॉन्सेप्ट, मस्कुलिन कॉन्सेप्ट हो पुलिस सर्विस. और डेमोक्रेसी रे सब बेले मस्कुलिन टा तळे रहइबो, सिविल सर्विस टा ऊपर रहइबो. तेणुकर जदि तू लिखिछु सिविल सर्विसेस they take it for granted. जदि पुलिस I have been doing freelancing, but it's not continuous. So should I include in employment details? Yes, you can. अरे मुझे चाहिए of course you can. मु एमती जाए क्लास नहीं जाए तापुरे टंका पत्र ही जीवो, then I'll stop teaching. Freelancer, not continuous, of course you can. डेट केमी दवा अरे तू लेख गोटे लेख ता भीतर लिखुन कौन कौन. ओके विल टॉक ऑन इट ठीक. सुन सीएएफ रे तू जा लिखियो सेटा ठीक है, तू जेमी डेट दउ सेटा ठीक, तू प्रिपेयर कर देकी जीव जहाँ जेमती डेट दउछु तू दे, तू प्रिपेयर करके जा. पचर या पचरिया कथा. Hello, sir. Sir, like one point of view that I heard was that when you sit, you should take more space to like be more confident. But another point of view that I heard that if you take more space while sitting, like you will seem like more masculine. So what should be our approach? More space in sitting, man? Like if you sit and you are being more spacious, like your legs are more spacious, your hand is more spacious. गोटे चेयर ते थी वाला नॉर्मल चेयर ते पड़ता, नॉर्मल बेसिक चेयर इतना स्पेस रो कांसेप्ट ही नहीं. No sir, I am asking like your legs, like is that legs are more wide or more narrow in that respect? OPC board कथा मु कहूच. OPC board रे hopefully you can see me properly, right? UPSC बोर्ड हेतले आ गोटे कोन हेथान ताकर एमि जोडे टेबल गोटे अछि यू टे, गोटे अछि यू शेप रे, गोटे अछि माने कोन सीधा. हमर OPSC रे कोन एडिकेटिक टेबल. I hope you can see my hand. If not, एडिकेटिक टेबल हेत वाला. Yes sir. तीनटा लोक बसु, तू एठी बसु द जस्ट टेबुलर विड्थ थिबो एतिकी, दैट्स इट. समान सेपटे बसु. नॉर्मल मैन मानकर सिटिंग स्टाइल अलग, वुमेन मानकर सिटिंग अलग. जेमिति नॉर्मल मैन जेमिति गोटे बसिया कथा एमिति नॉर्मल गोटे स्टेट करियो सेमिति बसिबो को. Yes, sir. Another question is like in English medium interview, if one interview like starts asking in Odia, should we like answer in English or in Odia? हाँ इंग्लिश. अरे तू इंग्लिश से दे देला भलो. Okay. We still have that, slavery thought process. Yes. इंग्लिश कहउतले माने कोनटा हेइथो बढ़िया बिलाटे हेइथो सेमति किछ नाही, बट वी आर स्टिल इन दैट थॉट प्रोसेस. और सेठी जो लोक माने बसथे देयर इन द 60s, we cannot change them, we do not need to change them also. Okay. इंग्लिश देई दे जदी कहलिबा जदी अटकीबो कोठी ओडिया रे कहि दो. Okay. अटकीले कोन करतरिबे कहि.
Sir, like I have a problem. I tend to fumble a little bit when I speak, so I'm trying to keep my pace a little bit slow, like this only. Like if I say like my name is Bhaktari Upadhyay, I So have this is the come best from speed this you to are, speaking. You are not okay. fumbling. Okay. Like in this I speed, sir. Okay, अबे okay, sir. एटा पूरा ठीक स्पीड अछि. Okay, sir. Okay. बेस्ट स्पीड अदरवाइज Okay. पूरा ठीक अछि. किछि पिला को स्टैमरिंग हुए. One of my friend, we do not know how, माने he cannot speak. He is an IAS officer. See, Indian Administrative Service double digit thila. First he cleared Uttar Pradesh PSC. Then last year he cleared IAS. UPSC. He cannot speak. से कथा कहि पारेनी. तेणुक से कौन करथिला जो मानकर अच्छी सो कॉल स्टैमरिंग से कौन करथिला ना से प्रिपेयर करके जाए जो माने स्टैमर हो तो आई होप यू माइट बी नोइंग मैटर से माने यदि गीत गाइबे भाई फ्लुएंटली गाइबे एंड दे आर वेरी गुड सिंगर्स आल्सो गॉड गिव्स समथिंग इफ ही टेक समथिंग तेणुक से तार कथाटा को एमती कर दे जाइथिला से जोठी अटकीबो सी ही विल स्टार्ट सिंगिंग माने एते स्मूथली एंड ही वाज अ वेरी स्लो स्पीकर एते से कौन करछि ना निजर वीकनेस टाकू हाइड करयार बाट कर ना ही इज एन आईएएस ऑफिसर न बुझियोस तो स्लो कहया कथा बर नथिंग रॉन्ग इन इट दैट इज वेरी गुड बुझियोछि ओके देन but why your name is Mowgli? No, sir. My name is Bhaktari Upadhyay. So Okay, the but Google account I have created was this name only. Sir, oh, another question is like my optional is economics. So whenever like I was seeing the previous year transcripts and there were a lot of questions regarding Odisha's economic development. So would it be okay if I go a little bit technical on this, like technical languages if I use? Okay. Of course you should go. If your optional is economics, you should go. Rather you only can go, others cannot. Okay, sir. भाई देख जो माने एठी आसी वर्ष मोदा अगरू के अबे कुछ we all are you are basically from middle class family चाकरी हमको निहाती दरकार स्पोर्ट्स रे ना हो आर्ट रे ना हो तो ना हो whatever you are in that is called as education हमको चाकरी दरकार that to civil services चाकरी हेले टिके लाइफ टिके मजा लगियो that's a whole game बापा मां को बर्डन ता तो जीवो this is the final last time to go and fight hence जहाँ डाउट अच्छी एने पचारे दे और else will wind up the session या पर जीवु बसिक पाठ पढ़ियो हां पचारे पिके ये पिके सर लास्ट टाइम कौन है ना से फास्ट मोर सरीला से मते जिबा पई कहले तो मु चाली के आसी जे डोर पाखरे पहुंचली से माने मते पुणी डाकी के आ गोटे क्वेश्चन पचार देले तो से डोर पाखरे छिडा है के आंसर दे हेबो ना पुणी तांको पाख को चाली के जिबा फेरी के आसु पचार दबु that is a simple bully go just first turn give a big smile then walk to the chair stand and answer that's a very good thing no सेटा तो गोटे भलो जिंस होइतला ताले that is very good thing then सर मु कर देथले मु सेठी छिडा है के आंसर दे देथले that is a personality कहलेबा at least now you will not do because एइना at least तमे जानि छ कि the Sobharani Nayak is not a student he is a bureaucrat and bureaucrats do not shout from a longer distance they will go ताको पे क्लर्क अछन दिबा तमे गोटे कथा मार के तू एसपी कोठी गाली करेनी कोठी बाडेनी से किछि करेनी किए बाडेबो कांस्टेबल बाडेबो सब इंस्पेक्टर बाडेबो से माने करिवे दिस पीपल आर डिग्निफाइड पीपल एसपी मोस्ट ऑफ द टाइम देखिबो यूनिफॉर्म रे भी नथिबो ट्रैक पैंट बिंदी बोलथो जींस टी शर्ट रे बोलथो ये एसआई फेसआई वाला सब देखिबो सब बोले यूनिफॉर्म नथिबो
सेठी जहाँ भूल कलु you should have gone to that chair and give a big smile and answer देखिए एस्पेक्ट था जहाँ heichi but this time we'll love to see your name in the list PK go PK Prashant Kishore please tell Sir, no doubt, sir. Thank you for the session. Sir, I have a question. Sir, I have a problem since last 5 to 7 years that whenever I become a little bit tensed, my hand starts trembling. It happens also in a situation where I am inside I am fully confident, but it becomes uncontrollable to control that. So, do you have any suggestion regarding that? अरे मोगली सुबह जाऊँ कुछ Sir, I said that in some situation my hands start trembling. Even if I am confident from inside, yes. Even if I am confident from inside, still I am not able to control that thing. मैं हाथ कौन पे धरू I don't know. Like last 3 to 4 years it started, but I don't know the reason right now. if you do not so it is not about nervousness right No, it's not nervousness. Like sometimes it's due to nervousness, but even if I control the nervousness part, still I'm not able to control the tremblings. see That's the point. is that something physical I don't know, sir. Should I like consult a doctor in this field? see few things are not in our hands right Okay. किसी जिनस तो छाड़ दे जदी एटा नर्वसनेस नुह जदी एटा फिजिकल नुह तार रीजन कोन तू जानिनु सेटा जदी हमर कंट्रोल रही नाही नाही हो एबी Okay, sir. जदी सब काम आमे कर दबा ताले जगन्नाथ ताले आ करिवे ताले कोन That's you true. need two things for him also no Yes. रिजल्ट आम हाथ नाही ना थिला ना अछि ना हबो रिजल्ट तुम हाथ नहीं जदि था तुम एठी न था तुम जहाँ कर दैट इज मैक्सिमम इज कर्म जे बुझी पाने से बुझी जीव बहुत जल्दी बुझी गिव योर बेस्ट कर्म द फ्रूट्स विल कम इन पिक्चर फ्रूट्स केमिति आसीबो दैट इज आल्सो नॉट इन आवर हैंड आम सीरियस आई एम 110% सीरियस तो एते कर्म कर दे कि जा कि तते फलटा जमी मिलियो दैट्स द होल गेम ना हाथ थर्टी थरुची हेलानी किंतु तार भीतर है जो हाँ one thing which will not do ever after in your life never talk negative about yourself and others that is cheapness या ता विरुद्ध रे कहना मेन कथा होची निज को डाउन टू अर्थ देखिया ना रे निज विरुद्ध रे भी कहना सेटा मोर गोटे रोग थिला मु ताको पर बुझिली जतले मु पढिली फिलोसफी दैट इज सुइसाइड निज को डाउन टू अर्थ देखिया ना रे केबे भी डिग्रेड करके कहिबुनी ना अन्य कहा विरुद्ध रे किछि खराब कहिबु बी ए बैलेंस मैन एंड वुमन देख ठिया हो हंस दे कि सब पड़ा bring that trait ये बुझ पालनी सर जति से माने स्ट्रेंथ और वीकनेस विषय पचारिबे देन व्हाट ये स्ट्रेंथ माने कहबो वीकनेस एटा बहुत कॉमन जिनसटा एटा भी हमु सिखाइतला ला जतले हम दिले थिलु वीकनेस टा को प्रथम कथा होची वीकनेस टा को एमती कहबो जोटा की तोर स्ट्रेंथ थियो जेमती मते सिखाइतला जदी तुमको वीकनेस पचराओ त तुम कोन कहबो ना कहबो सर जेतेबेले काम पड़े मो ऊपर मो काम पाए कि एते कंसर्न हे जाए मो मोर हेल्थ को भी देख पारे हला माने तू तो देखौ छु कि सर आई एम वेरी वर्क ओरिएंटेड किंतु सर ता पर मु वर्क ऑन हेल्थ बैलेंस ऊपर काम कले एति घंटा सोया कथा मु सोइले किंतु मु सबले प्रिफर करे कामटा को मु केमि साथ दे बुझि परछु तो प्रकृतरे तू स्ट्रेंथ ही कहू माने कौन सी कौन शुणे पे जाउची कारण तो ऊपर वर्क लोड पड़ियो
ब्यूरोक्राट ना वर्कलोड तो ऊपर पड़िबो तो से तापर आ कोन केबे धर गोटे वीकनेस तो पाटर भूल रे बाहरी गला धर बाहरी गला देन व्हाट टू से तापर तू तार ता पे कि कोन कलु तो सर मु जेमति मु आगु बहुत धर को भूल ले कह दिलु कि मोर कंसंट्रेशन पावर भारी कम धर कह दिलु किंतु सर मुने मेडिटेशन करी कि ताको ओवरकम कर दिछु किंतु मेडिटेशन ऊपर तापर क्वेश्चन पचरा बोले मेडिटेशन में कौन कलु योगा कौन मेडिटेशन कौन से ये जिनस आम आगुरी प्रिपेयर होगी जाई बुझला बुझला आज्ञा सर एनी prelims student here any doubt on that that's it anything else you want to ask इसके मर्चिका कहला को मोर मो पास वोकाबुलरी रो शॉर्टेज होची तो सेटा केमसे मैनेज करियबो अरे शॉर्टेज किछ नहीं there is nothing like shortage you have enough तोर जदी वोकाबुलरी शॉर्टेज था तू एठी न था तोर मेंस ही क्लियर ही न था माने से दैट सो कॉल्ड वोकाबुलरी शॉर्टेज इज सेल्फ इंपोज जेमिति गोटे टाइम रे मो ऊपर मु मोर नर्वसनेस टाको सेल्फ इंपोज करी बस्तल बुझला anything else or should we wind up Sir, one question. Like, I was seeing the post transcript of 2022, and There there was the transcripts of 2022 interviews, and there was a recurrent theme on like how will you manage when your senior will post. किछि सुभावनी Hello, sir. Is it audible now? ए जोर कहि Is it audible now, sir? का Yes, sir. Sir, in the post transcript of 2022 interviews, okay, there was a recurrent theme on how to handle pressure when your senior put like give you some unethical work, etc. So you are in service, so you will be able to tell better how to handle those kind of questions. माने मते जहा सुभाला तू कहू कि धर तोर सीनियर करप्ट अछि ए तो Again, a senior pressure proposal undue pressure, how to handle those kind of pressures. माने सीनियर तो ऊपर अनड्यू प्रेशर पकोछि तो Again. ताकू एक अरे always a law to be followed there is a constitution so आमे तो जाय to we owe our allegiance to the constitution and the people of India right तनो कर जहा लॉ प्रेस्क्राइब अछि से अनुसार हम काम करू जदि किछि उल्टा उल्टा काम हम सीनियर कहूछि हम कहबो कि सर एथर जदि लिखित रे दियंतु Okay, that is a good point. बुझला so these are easy questions sorry okay सब बड़े लॉ very recently माने I am talking of 3 दिन पूर्ण कथा बोलछे 2 दिन 3 दिन पूर्ण कथा बोलछे I was talking to a navy officer he is a rank of a commodore माने army रो brigadier post से थियो mostly if the then he might become the marshal of navy Indian navy I asked him a very specific question which I cannot say here ताको पचारली his answer was amazing his answer was what he said there is a possibility that the legislature might fail even the judiciary might fail but the armed forces are the last instruments of Indian constitution which will never fail the constitution ये तीन जन का फेल हे गले से भूल वाला आंसर भी जल्दी भी ऑर्डर दे देवे इंडियन आर्म फोर्सेस एयर फोर्स नेवी एंड आर्मी से माने फेल करिवे नहीं
ସେମାନେ according to the constitution ही काम करिवे जदि गोटे बड़ ऑर्डर आछि जोटा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंडियाज इंटीग्रिटी विरुद्ध रे जीवो ताले एमाने तीनटा को विंग विरुद्ध रे जीवे माने दिस वाज द जिस्ट एंड द समरी. So India as a nation is still intact because of strong ethical moral armed forces. I'm talking of a very high ranking Navy officer. I was talking to him few days back. A specific question I asked which I cannot say, but this was his beautiful answer. Hence you being the bureaucrat as a steel frame of this nation, willing to stand with the constitution and the law. You are a servant of the public of this nation. You are a civil servant, right? You are not the servant of your seniors. Hence law follow karibu sir. Constitution bind karibu jodi epart sort କଥା कहले mo ko certificate लिखि दियंतु देखिया तब getting बुझला. Okay, anything else? अच्छा करेंट जहाँ जहाँ भी न्यूज अच्छी से भीतर किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक कह दियंतु. बाबा ताकू निजे देखे देखले तो विल गिव अ लिस्ट टू यू इन द ग्रुप. 30-40 टा और 50 टा पाखा पाखी बछा बछी करी मु टिके दे दियो हला ग्रुप पे दे दियो. एनीथिंग टाइम टू वाइंड अप. आज आ दु जण ब्यूरोक्रेट आस्थांते आज जो नंबर टिके टाइम है विल कॉल इन 1 सेकंड. तो सर मॉक टेस्ट रो कोन प्रोसेस कोन और शेड्यूल टा कोन. अरे तू से ग्रुप जॉइन करे जान दी आ गोटे ग्रुप बना है कोसे कहल व्हाट्सएप रे बिला गोटे अछि टेलीग्राम ग्रुप गो एंड जॉइन इट. व्हाट्सएप ग्रुप रे just join the telegram group, drop a message there, we'll get you out to the WhatsApp group also. Jala बे मोगली आज्ञा सर. ऐसे लिंक से टेलीग्राम ग्रुप रो अच्छी तो ग्रुप रे बे जॉइन करी कह पाई जोनी तू ए लिंक ता केमति पाइलु. सर मु से ग्रुप रे अच्छी महाविद्या ग्रुप रे. अच्छा महाविद्या ग्रुप रे अच्छो तो आज्ञा आज्ञा go ask there. अच्छा you cannot write there huh? Okay, Okay. we'll get you added we'll get you added to that WhatsApp group. Okay. Hala सल्ला जा जाके कौन करिवे ने go and study is a final blow. एठी जदी 15-20 मार्क बेसी आनी दउची एवरेज जो 30-40 एथरे एवरेज तो बेसी मार्क आस करियो. if 140 is the average you can score 190 also 200 around score कर 50-60 मार्क तो मु एठी कर देली ना हल्ला मोर मेंस जेंती एची who cares बुझला. just go, the law being said to you, you need to follow the law. Hopefully you remember. I'll give you this video very soon in that YouTube pakeda tam tak punta dekh do la. Okay, bye bye, all the best. Thank you sir.